Hi everyone, good evening and welcome to this session on the admission counseling process and the NLU preferences which you have to submit during the counseling process for CLAT 2026. But before I begin the session, first of all, congratulations to everyone, those who have made it, those who have got the rank, those who have got the counseling invite from the consortium. So you are now moving on to the final stage of the selection process, which is going to be a long process. थोड़ा टाइम लगेगा for most of you. The results, you'll have more clarity on 7th of January when the first allotment list will come out, but this will continue for a long time till May tak pura admission process they'll be completing. The academic sessions in the top NLU start in July, 1st of July. For rest of the NLUs, it is around mid of July, and some of the NLUs, it is 1st of August. So you have to be now very careful while you look at this form which has been opened for you, and you have to fill in your preferences for the NLU. So what I'll do is, first I'll start with how this preferences work, how the allotment happens, because you'll be definitely submitting the preferences. Minimum 15 you have to submit, but how the entire allotment process works, that all I'll say also I'll help you understand. So let's move on quickly and try to understand how this entire process is going to work. What are the documents required? What is the steps you have to follow? Then if it is about the allocation, which is as per your liking, then you will be freezing. Then you have an option of float, you have an option of exit. So you have to be very careful at each of these stages. So let's go ahead, understand each of these stages. But before that, let me help you understand how this allotment happens. So it's a combination of both your rank as well as preference. Now when I'm saying rank, remember, it is about all India rank, it is about your state rank if your domicile rank is there. Then it is also about the categories, because category wise allocations will happen. Some states have seats across the reserve categories available for pan India basis. For some of the NLUs, the seats are in the reserve category particularly are available only for the students of their state. So all this will be considered. Then gender is another factor. So female students, there are 12 NLUs where you have the horizontal reservation available for you. So all these factors work in combination along with the preference which you will submit. In the counseling process. Okay, so the best possible mapping which gives you the best college as per your rank, your preferences submitted, is done by the consortium, which will run through 5 lists. Basically, there'll be 5 lists coming out, and the entire process will be completed by May end. So for each of the NLUs, the subsequent round will depend on how many students have opted out of the selection process in the previous round. So accordingly, those you can say who have been kept in the waiting list while you are not aware of your waiting list, but you have been kept in your waiting list, then your movement will happen over there. So first, the upgrade happens if there is a vacancy in the next list, and then few students are moved from the waiting list to that vacancy which has been created. So please understand one thing. It is not just about your rank and preference. If you're not rank 1, or at least I can say up to rank 100 or 91, which is the general category if I talk about, which is the seats for the Bangalore, because of course the first choice goes to Bangalore over here. It is also dependent on what others are filling in the form when they are ranked higher above you. So you are dependent on your rank, you are dependent on your preference, you are also dependent on the preference of the students who have been ranked higher than you. So that is the first thing you have to understand. So their choices will be considered first. Okay, even if you put an NLU on top, considering okay my rank is lower, मेरा rank नीचे है, but मैं अपना state का NLU या कोई NLU ऊपर डाल देता हूँ जो normally lower ranked NLU consider किया जाता है, तो मुझे शायद first allotment मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले आपके ऊपर जितने स्टूडेंट्स हैं, all the students who have better ranks than you, उनके चॉइसेस को कंसिडर किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए. उसके बाद आपके चॉइस को कंसिडर किया जाएगा. ओके, सो अपग्रेड विल बी अलाउड इन द सब्सिक्वेंट लिस्ट, बट डाउनग्रेड नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट डाउनग्रेड योर प्रेफरेंसेस. सो वंस यू हैव सबमिटेड द प्रेफरेंसेस, लेट्स से you have kept unfortunately you have kept the Bangalore in 4th, or whatever reasons you kept any of the NLUs which was your first 4th, and you have been allocated that college. Now the
अपग्रेड विल हैपन इन द टॉप 3 व्हिच यू हैव सबमिटेड इन द प्रेफरेंस लिस्ट। उसके नीचे जितने एनएलयूज हैं अब उसको आप ऊपर नहीं ला सकते हो। अब ये 3 जो है और इसमें ऑर्डर भी चेंज नहीं हो सकता है, वो उसी ऑर्डर में रहेंगे 1 2 3 एंड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेड। ओके, जो उनको फर्स्ट चॉइस एलोकेशन होता है उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीज करो या एग्जिट करो। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको एलोकेट कर दिया जाएगा तो आपको सिर्फ फ्रीज करना होता है सीट्स को, बिकॉज देयर इज नथिंग अबव दैट, सो यू हैव गॉट योर फर्स्ट प्रेफरेंस। या फिर आप पूरा अलॉटमेंट लिस्ट से बाहर होना चाहते हो, इस साल एडमिशन नहीं लेना चाहते हो फॉर सम रीजन, यू माइट हैव कंसीडर्ड अनदर कॉलेज और यू हैव चेंज्ड योर प्लान्स, व्हाटएवर इट इज, सो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल। Okay, so let's move on with this note and I'll help you understand before I reveal the NLU preference list for you. Let's understand how does all this process work. So first understand there is a candidate whose name is X. So एक hypothetical name लेते हैं X, category is general, domicile उत्तर प्रदेश का है और उसका ऑल इंडिया रैंक 145 आया है CLAT 2026 के एग्जाम में। ओके, नाउ what will happen अगर वो स्टूडेंट प्रेफरेंस भरता है and his first preference is NLU जोधपुर followed by Bangalore, followed by Hyderabad, followed by Kolkata. For some reason, the student put the NLU Jodhpur on rank 1. First preference में NLU Jodhpur को डाल दिया, second preference में जाकर के Bangalore को डाला। Okay? अब इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि इन NLUs का इनटेक क्या है इन द जनरल कैटेगरी, एट द सेम टाइम स्टूडेंट का रैंक क्या है। अब मैं फिलहाल दो एनएलयूज की बात करता हूं। नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी बैंगलोर की बात करते हैं जहां पे 91 जनरल सीट्स हैं ऑल इंडिया कैटेगरी के ऊपर, और रिमेंबर इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है फीमेल्स के लिए। नालसार हैज 51, सो इफ यू काउंट दिस दैट बिकम्स 142। अभी ये स्टूडेंट जो है इस केस में इसको ये दोनों अलोकेट नहीं होंगे अनलेस समबडी मूव्स आउट एक्चुअली, बट बिकॉज ही गेव एनएलयू जोधपुर एट द फर्स्ट प्रेफरेंस he will be allotted NLU जोधपुर। अब इसके पास एक ही चॉइस होगा, या तो एडमिशन NLU जोधपुर में लेना है या फिर इंटायर प्रोसेस एडमिशन को फोरगो कर जाना है, एग्जिट कर जाना है। मान लो स्टूडेंट ने एनएलएस बैंगलोर को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, सेकंड पोजीशन पे नालसार हैदराबाद को रखा, थर्ड पोजीशन पे एनयूजेएस कोलकाता को रखा और फोर्थ पे एनएलयू जोधपुर को रखा, which is the order which we'll also recommend. Then in this case the student will get NUJS Kolkata technically speaking because 142 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी कंबाइंड, 145 रैंक है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि इसको फर्स्ट लिस्ट में हैदराबाद मिल जाएगा क्योंकि अभी कल एनएलयू दिल्ली का रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग वहां से मूव करके एनएलयू दिल्ली चले जाएंगे इस लिस्ट में से, तो ऑटोमेटिकली इसका अलॉटमेंट हो जाएगा वहां पे। बट अज्यूमिंग एनएलयू दिल्ली का पूरा सिनेरियो भी डिले हो जाता है, कुछ भी होता है, तो 142 के अगेंस्ट 145 रैंक देख रहे हैं, तो फर्स्ट इसको एनयूजेएस कलकत्ता बहुत आसानी से एलोकेट हो जाएगा। बट सब्सिक्वेंट लिस्ट में डेफिनेटली कुछ मूवमेंट्स इधर उधर होती हैं, कॉलेजेस को लेकर के ड्रॉप कर देते हैं बच्चे। आई हैव कम अक्रॉस स्टूडेंट्स हु हैव गॉन टू Delhi University colleges, leaving national law universities. I know students, so that is also a possibility. So in that case, the student will definitely get the Nalsar in the very second list itself. So this student must put upgrade as an option, float as an option in the first list, second list में freeze कर देना है या open रखना है। हालांकि movement to Bangalore तो definitely नहीं होगा, तो freeze करके अपनी आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सो दिस इज हाउ द इंटायर प्रोसेस वर्क्स। सो सीट्स, अवेलेबिलिटी, योर रैंक, योर प्रेफरेंस, आपके ऊपर जितने लोग हैं उनका रैंक, उनका प्रेफरेंस, सब कुछ मैटर करता है एलोकेशन में। ओके, दिस इज व्हाट योर प्रेफरेंस ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज टू बी। इस पहले 7 में कोई चेंजेस मैं नहीं रिकमेंड करता हूं। वी डोंट रिकमेंड एनी चेंजेस इन द फर्स्ट 7 NLUs. Of course, on top, you have to keep Bangalore, you have to keep Hyderabad at second, you have to keep NUJS Kolkata at third. Now, NLU Jodhpur at fourth position, followed by Gandhinagar, followed by Bhopal, followed by Mumbai. Okay. Now, of course, the question comes here, what about the students who want to go for the BSc LLB program? So now it will be your choice. You can put it on top, or you can still put BLLB of Kolkata at third and BSc LLB of NUJS Kolkata at fourth position. Similar call should be taken for NLU Bhopal. So for you, this might move to 9 preferences. अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, otherwise it is how this first preferences should look like. Now the question is, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, तो why not allow me to keep, let's say, Mumbai on top or Bhopal on top? देखो, चांसेस हैं कि भोपाल से शायद गांधीनगर मूव कर जाओ। भोपाल अगर ऊपर डाल दिया
और वो नहीं आपको क्या बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट में एलोकेट हो गया और आपके चांसेस गांधीनगर के बन रहे थे सब्सिक्वेंट लिस्ट में, बिकॉज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था वो आपने पहले डाल दिया, तो अब आपको उसके अलावा कोई ऑप्शन मिल नहीं सकता, यू विल नॉट गेट एनी अदर ऑप्शन. So this is where you have to be very, very careful. Remember, it's not just your rank preference unless you are in the top 90. It's also about the ranks and preferences of other students in the country. Top 91, 92, 100 में नहीं आप, तो बाकी स्टूडेंट के प्रेफरेंसेस पे आप डिपेंडेंट हैं. तो बी केयरफुल, इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है. ये फर्स्ट 7 एनएलयूज हैं. रिवीलिंग द नेक्स्ट वंस, नेक्स्ट कैटेगरी. सो यू हैव एचएनएलयू रायपुर, then followed by NLU Kolkata, NLUO Cuttack, Orissa, then RGNUL Patiala, Ram Manohar Lohia National University Lucknow, Chanakya National University Patna, National University of Study and Research in Law, which is NUSRL Ranchi, followed by NUALS Kochi, followed by DSNLU Vishakhapatnam, one of the oldest law colleges in the country, AP Law College, converted to NLU quite long time back. Then we have Maharashtra National University, Nagpur. Now, remember, Nagpur has a very wonderful program on adjudication. But for that, the process is different. The allocation will happen here, and those students who have been allocated and later, they will give a call because interview happens over here. Okay. Then Nagpur follows TNNU, Trichapalli, then Aurangabad. We have Guwahati, Shimla, Sonipat, Jabalpur, Silvassa, Prayagraj, Agartala, and you have Ailer, Goa as well coming here. So this is how your preference should look like. I'm keeping the screen out there for 30 seconds. I'll go back once again, show you once again. So एक बार first से reveal करते हैं. Your top 7 NLUs should not have any change. This is what यहाँ पर you can make changes. So starting here, you might want to make some changes based on your location preference. Probably, let's say I'm from Odisha, I can take a call between Raipur and Cuttack. Similarly, between Patiala, Lucknow. That's a call you can make. So that's the only leeway I would suggest you should have. Otherwise, you don't make changes over here. So this is your next round of NLUs, next list, and followed by the final list over here. Okay. So this is how it should look like. Okay. This is how it should look like. I'll take up the questions at the end. I can see comment box out there. Questions are rahe hain. So this is how your preference of NLU should matter. Okay. Should be filled in the counseling process form. Horizontal reservation, females के लिए available हैं 30%, 20%, 15%. Most of the NLUs provide 30% horizontal reservations. Now, what is horizontal reservation? Understand it very clearly. So, typically, in an institution, in a government institution, you have general category seats, you have scheduled caste category seats, you have scheduled tribe category seats, you have OBC non-creamy layer reservation seats, and EWS category seats. Now, when I'm talking about horizontal reservation, 30%, let's say in Bengaluru, across all the categories, 30% of the seats will be mandatorily filled by female students, and they are also open for them in the remaining 70%. Okay, so 30% of the total, let's say a university has 100 general category seats. So 30 of that seats will be mandatorily female students, and for the remaining 70, these seats are also available to the female students based on their scores and ranks actually. So definitely an advantage to all the female students over there. So don't miss out on the chances. Great opportunity out there. So be careful while you are filling the preferences. You will have maximum chances of selection because of this horizontal reservation. So please ensure that your forms are filled carefully. Okay. Now, registration process started today, 6 p.m., 17 December it is. It is open till 27 December 2025. You don't have to rush through. But that does not mean that you are going to fill the form on the last day itself. Please don't do that. Technical glitches can happen and they will not listen to anybody. Okay. So please understand the form, the counseling registration form will be open till 10 p.m. sharp on 27 December. So it will close at 10 p.m. on 27th of December 2025. Okay. You have to give NLU preferences, minimum 15. You have to pay the counseling registration fee, which is general category. For general category, it is 30,000 rupees. Everything has to be done online. For rest of the students, it is 20,000 rupees. Now, this counseling registration fee is refundable. Okay. If you don't complete your entire admission process, you don't take admission, you are not allocated a seat in any of the rounds,
you exit in between, you are eligible to get that refund. For that also there is a timeline, but this fees has to be submitted to remain in the admission process. If you don't pay the fees, let's say 30,000 by 27th December 10 p.m., then even if you've got a rank, even if you have submitted your preferences, because that's the first step to go about, you will not be able to secure a seat for yourself. Okay, so this payment is mandatory, and this can only be done through your CLAT 2026 login. Sorry. Now, what you will do is you will log into your CLAT account, and first you will update your NLU preference, which I have already shared. Actually, if you have missed out that part, watch the video once again after I end the session, and then you can copy it over there actually. Then next part is the payment process, which is where you make the payment using the make payment button. It will be only visible to the students who have been considered for the admission counseling process, and then you complete the payment. Wait till you see that successful message on the screen, payment successful, before you log out or you move on to the next process. So your payment has to be successful. Please be advised once again, do not wait for the last moment, last day bharenge, 25th December is a holiday, us din bharenge. Please don't do that. Try to complete this entire process in the next 2, 3, 4, 5 days. It may take another 3, 4 days for some reason. Why? Because you'll also need transfer certificate from your school, your character certificate, so which is one of the documents required. So tomorrow you might be required to go to your school, your institution, and request them to issue you a character certificate. So I'll come back to that. Okay, so when we talk about the documents required, an eligible candidate who has been allotted a seat as per the indicated NLU preference, आपको हर उस बंदे को जिसको NLU preference submit करना है, उसके बाद अगर आपको seat allocate हो जाती है, you have to pay a non-refundable confirmation fee of rupees 20,000. Okay, so before you get the option of freezing your seat or considering the upgrade option through float or to exit, or for these two options, not exit, exit can be done simply, आपको 20,000 रुपए का पेमेंट फिर से करना होगा. सो 30,000 आपने पहले पे किया, या 20,000 आप कैटेगरी स्टूडेंट्स थे तो आपने पे किया. दोबारा आपको सभी को जिनको सीट एलोकेट होगा उनको 20,000 पे करना है. ओके, नाउ इफ यू डोंट पे दिस फीस, व्हाट हैपेंस? इवन इफ यू हैव पेड द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, योर एडमिशन प्रोसेस स्टॉप्स देयर. आपको फिर नेक्स्ट लिस्ट में अपना नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने सीट को कंफर्म नहीं किया है. Even if you want an upgrade, you believe that I can be upgraded to a better preference of mine, still you have to pay this 20,000 rupees, and this is non-refundable. Tomorrow you decide not to continue with your admission, not to join the college, 30,000 refund hoga within that stipulated timeline, but ye 20,000 kabhi refund nahi hoga. Okay, you pay it only once, and both confirmation fee and the counseling registration fee are part of your fee. फर्स्ट सेमेस्टर फी जब आप पे करोगे उसका पार्ट है ये. सो ये फीस का ही पार्ट है. ओके, ये वहां पे एडजस्ट कर दिया जाएगा. अब फ्रीजिंग का ऑप्शन पहले समझ लो. यू हैव बीन एलोकेटेड अ सीट, आपको एक सीट मिल गया आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे, एंड यू आर हैप्पी विद दैट सीट. बैंगलोर जिनको मिल जाएगा ऑफ कोर्स, तो कहानी बहुत सिंपल है. मान लो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला था नालसार हैदराबाद, you belong to Telangana, and that's the reason you put that. So in that case, you can go ahead with the freeze option. अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया जिसको अपने रैंक 1 पे रखा था, तो आपको फ्रीज ही करना होगा या एग्जिट करना होगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा. लेकिन अगर आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड्स कोई भी एलोकेशन हुआ है आपके प्रेफरेंस लिस्ट से, एंड यू बिलीव दैट ओके, आई एम ओके विद दिस नेशनल यूनिवर्सिटी, आई डोंट वांट टू चेंज दिस, you must go ahead and freeze it actually. So by pressing the freeze button, ये पेमेंट करने के बाद सारा होगा. So freeze करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे राउंड्स में आपको ये कंफर्मेशन फी डेफिनेटली पे करना होगा, तभी फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन आपको दिखेगा. एक बार आपने फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और कंफर्मेशन फी पे कर दिया, आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा. आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं यार मुझे अपग्रेड होना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता है. फ्रीज बटन दब जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है. अब वही एनएलयू आपको एलोकेटेड है, अब चाहे तो आप विड्रॉ करो या बाकी पेमेंट करके अपना फुल फ्लेजेड कंफर्म करो एंड गो टू द नेशनल यूनिवर्सिटी टू स्टडी. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स अपना फ्रीज ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, उनको रिमेनिंग जो फीस होगा माइनस दी 50,000 रुपीज और 40,000 रुपीज डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी. मान लो एनएलयू का फर्स्ट सेमेस्टर फी इज 2 लाख,
So you have already paid 30,000 as general category plus 20,000. So remaining 1,50,000 has to be paid by 24th of April 2026. इसमें NLUs आपको डेफिनेटली कंटैक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं. सो वेट फॉर दैट. फ्लोट ऑप्शन इज बेसिकली अपग्रेड ऑप्शन. ठीक है, आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलयू नहीं मिला, you want to have that upgrade option available. The term here is float option. Okay, I have got, let's say, Nalsar, but I'm let's say I'm around a rank of 95 96 or something like that. मुझे पता है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे नालसार मिल जाएगा. यू मस्ट एक्सरसाइज फ्लोट ऑप्शन. मुझे मेरा फोर्थ ऑप्शन मिला है, बट मुझे लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन है, और देयर इज नो हार्म इन कीपिंग द फ्लोट ऑप्शन. क्या पता एग्जिट्स हो जाएं और किसी कारण से, और आपके चांसेस बढ़ जाएं, तो आपको ऊपर जाने के, आपको नलसार एलोकेट होने के, तो एनयूजेस मिला था. तो ये फ्लोट ऑप्शन इस तरीके से काम करता है. ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में फ्लोट ऑप्शन होगा. फिफ्थ राउंड जो होगा उसमें फ्लोट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां एडमिशन प्रोसेस क्लोज किया जाएगा. सो फ्लोट ऑप्शन को जो है स्टूडेंट को वहां पर जो पेमेंट है, कंफर्मेशन फी, वो पे करना ही होगा फर्स्ट सेकंड राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में, और उसके बाद ही आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो. एग्जिट ऑप्शन इज बेसिकली यू डोंट वांट टू गो हेड. सो अगर आपने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया, बट फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, यू हैव चेंज योर माइंड, you want to go into a different private college or government college, or you are completely changing, going somewhere else, you have decided to go and study in some other university, then you can go ahead and exit. Exit means completely out of the process. You'll never be considered for admission as long as consortium is allocating the seats. जब 5 लिस्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद वैकेंसीज अगर आती हैं, तो फिर इंडिविजुअल एनएलयू स्पॉट काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं. ओके, which is a very time bound process. But till fifth round, individual NLUs cannot display any vacancy. Entire process is coordinated through the consortium, your CLAT login account. Okay. अब schedule of allotment समझ लेते हैं before we talk about the documents required. So the registration process begins and it is available till 10 p.m. on 27th of December 2025. First allocation list will be published on 7th of January at 10 a.m. And those students who will be allocated the NLU, any NLU in the first round of list, first allotment list, they will have time from 10 a.m. on 7th January 2026 to 15 January 2026 up to 1 p.m. to pay that confirmation fee of 20,000 rupees. Okay, तो जिनको फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हो जाएगा 7 जनवरी को 10 AM उनके अकाउंट में डिस्प्ले हो जाएगा. वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको फ्रीज फ्लोट एक्सरसाइज करना है, तो आपको पहले वो 20,000 रुपीज का जो नॉन रिफंडेबल 20,000 रुपीज का कंफर्मेशन फी है वो पे करना होगा. इसके बाद the consortium will look at all the allocations, कितना पेमेंट आया, किसका नहीं आया, कितनी वैकेंसी क्रिएट होती है, उसके बेसिस पे सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश होगा on 22nd of January at 10 a.m. So on 22nd January 10 a.m. the second allotment list will be published. Now what will happen over here? First, the vacancies will be looked into. अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, उनको पहले मूव किया जाएगा उनके अपर प्रेफरेंसेस के लिए. ठीक है, उसके बाद अगर वैकेंसीज जहां जहां क्रिएट होंगी, मतलब मोस्टली लोअर एनएलयूज की हम बात कर रहे हैं, वहां पर नए बच्चों को वहां पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको अलॉटमेंट होगा. क्योंकि जो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट हो चुका है और वहां से जो वैकेंसी क्रिएट हुई, तो पहले फ्लोट वाले स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलता है, उनको पहले वो एनएलयू अपग्रेड कर देगा. अच्छा, अपग्रेड होगा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस इफ द अपग्रेड हैपेंस? यू हैव टू मूव टू द न्यू कॉलेज नाउ. You cannot say no, I want to retain my seat. That's not a possibility. जो पहले allocation हो गया और आप you went for the float option, then if you are upgraded to your better preference, okay, then you are now part of that new college. You cannot go and say मुझे वो पुराना college ही वापस चाहिए. That is not possible. Okay, once upgraded, now you have to go to the new college. Now your decision whether you want to continue or not. You can continue with the float further if your third, fourth preference has been given. First preference अगर upgrade second NLU जैसे नालसार दिया, तो of course upgrade ज्यादा से ज्यादा NLS Bangalore ही होगा, depending on how you have filled the preference list. So second list 22nd January को आ जाएगी, and those students who will be allocated fresh in that list, they'll be making that payment of the confirmation fee. Okay, क्योंकि जिनको अपग्रेड किया है उन्होंने तो ऑलरेडी 20,000 का confirmation fee पे कर दिया, वो वन टाइम पेमेंट है.
तो जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला या कोई भी प्रेफरेंस मिला सेकंड लिस्ट में, उन्होंने ऑलरेडी, उनको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि उनको ऑलरेडी अपग्रेड किया गया, 20,000 उन्होंने पे किया। जो फ्रेशली इसमें लिस्ट में ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज एट द लोअर एनएलयूज, उनको पेमेंट करना पड़ेगा for that confirmation fee, 20,000 non-refundable. That can be done till 29th of January 1 p.m. Again, consortium will look at all the available aspects over here. कितनी वैकेंसीज हैं, कितने अपग्रेड किए हमने, कहां से किसको अपग्रेड करना है, प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा they'll go through. After that, they'll come out with the third allotment list on 5th of February 2026 at 10 a.m. तो 5th February 10 बजे थर्ड एलोकेशन लिस्ट आ जाएगा। लास्ट टाइम चूंकि काफी डिले हुआ था लास्ट ईयर, तो 3 ही लिस्ट हुए थे कोर्ट में केस चलने के बाद। इस बार फिर से दे आर गोइंग बैक टू द ओरिजिनल प्रोसेस ऑफ 5 लिस्ट। तो थर्ड लिस्ट आ गया। थर्ड लिस्ट में जो फ्रेश एडिशंस हुए हैं उनको अब 20,000 नॉन रिफंडेबल पे करना पड़ेगा। बाकी स्टूडेंट्स फ्रीज और फ्लोट में अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में फ्लोट रखा था, प्रेफरेंस नहीं चेंज हुआ, सेकंड लिस्ट में, आप थर्ड लिस्ट में भी फ्लोट चल सकते हो। ओके, अब यहां पर एक चीज है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले हैं उनको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपको अब यूनिवर्सिटी पेमेंट भी करना है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में थे उनको जो है यूनिवर्सिटी का जो रिमेनिंग फीस होगा माइनस दिस कंफर्मेशन फी एंड द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, उसका पूरा पेमेंट जो बैलेंस होगा वो करना पड़ेगा ऑन बाय 24th of April टिल 5 PM। ओके, तो वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नाउ प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों का ये होगा कि मान लो मेरा एलोकेशन हो जाता है, मैंने एनएलयू का पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, और फिर मेरा फोर्थ लिस्ट में अपग्रेड होता है, तो उस केस में कंसोर्शियम वहां पर पेमेंट चेंज कर देता है टू दैट एनएलयू। डिफरेंस होगा, मान लो नेक्स्ट अलॉटेड एनएलयू का फी हायर था तो आपको सिर्फ डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो एवरी प्रोसेस इज डन थ्रू दिस कंसोर्शियम अकाउंट, योर क्लैट अकाउंट। देयर इज नथिंग एल्स टू वरी अबाउट। Then fourth allotment list will be published on 2nd of May, and those who have been allotted fresh in the fourth allotment list, they will pay the confirmation fee of 20,000 rupees to exercise their freeze float option, क्योंकि अभी एक लास्ट लिस्ट आनी है 15th May को, which will be the fifth allotment list. तो जो फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स ऐड होंगे, 20,000 confirmation fee. Found will be the final round of allocation. All upgrades will happen here. Everything freezes. The floats option will close, and those will be added fresh. Now they'll be complete. उन्होंने 20 तारीख तक पे किया और 30 मई तक बाकी पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनका विंडो थोड़ा छोटा होगा। ओके, so this is the schedule of the allotment. I hope you have understood this. अब बात करते हैं which are the documents required. What is the eligibility of CLAT? The eligibility of CLAT is very simple. Eligibility of CLAT is very simple. You should be in class 12th or you must have completed class 12th. तो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका 10th का सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी है, so your grade 10 mark sheet is a mandatory document. Your CLAT 2026 admit card, which you had taken to the examination hall, duly signed by the invigilator, which you have retained, that is another mandatory document. Class 12th mark, if you have passed class 12th, you already have your mark sheet. For you it is mandatory, because जब आप फॉर्म काउंसलिंग फॉर्म में दिखाओगे पास्ट, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। Character certificate from the educational institution last attended. Now those who have already completed their schooling, they must have the character certificate, usually valid for 6 months. अब पुराने इंस्टीट्यूशन में जाओ या जहां पर भी हो वहां से बना लो, लास्ट अटेंडेड है वैसे। बट मोस्ट ऑफ यू आर इन क्लास 12th राइट नाउ, यू विल बी अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, सो अभी तो नहीं मिल रहा है। So you have to go to your school tomorrow and ask them to issue a character certificate to you, which you will be uploading over here. ठीक है, ये ध्यान में रखना, मैंडेटरी नहीं है अभी फिलहाल के लिए तो, बट ये बनवा लेना। ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एजुकेशनल बोर्ड लास्ट अटेंडेड, ये भी अभी मैंडेटरी नहीं है। बट जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप कास्ट रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हो अलॉटमेंट में, तो अगर आपने कंसोर्शियम के फॉर्म में जो क्लैट फॉर्म था उसमें अपना कास्ट अप्लाई किया था, शो किया था, और आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। रिमेंबर दिस। ओके, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी अपना
सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है अगर आपको डोमिसाइल के बेसिस पे अलॉटमेंट हो रहा है। सिमिलरली अगर जो भी रिस्पेक्टिव अदर कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, सर्विसमैन है एक दो एनएलयूज में, तो वहां पर उनके लिए भी सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होंगे ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, रिफंड कैसे होगा, कब होगा? सो अगर किसी कैंडिडेट को कोई सीट ही एलोकेट नहीं हुआ 5 लिस्ट में, बट आपको कंसिडर किया गया था फॉर द इन द पूल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, 5th राउंड एंड होने के बाद, या आपने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, आपने एग्जिट कर दिया when you are allotted a national university, in such cases you can exercise your exit option before 1 p.m. on 8th में। तो उस केस में कोई भी पैसा नहीं कटेगा, वो सारा पैसा आपको मिल जाएगा 30,000 या 20,000 में जो भी आपने अप्लाई किया था। देखो, कंफर्मेशन फी नॉन रिफंडेबल है, तो जो रजिस्ट्रेशन फी जनरल कैटेगरी 30,000 है वो फुल एंड फाइनल मिल जाएगा। एससी एसटी बाकी कैटेगरीज में 20,000 वो फुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 8th मई के बाद अप्लाई किया तो 5,000 डिडक्ट करके बाकी पैसा वो रिटर्न करेंगे। ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी से रिटर्न होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस। ओके, कंफर्मेशन फी जो 20,000 है वो रिटर्न नहीं होने वाला है। सो दैट्स द प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। सो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना। नाउ लेट मी टेक द क्वेरीज फर्स्ट। ऐसे मैंने काफी चीजें कवर कर दी हैं। आई हैवंट ऑप्टेड फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड, बट इस बार एप्लीकेशन फॉर्म में एनआरआई स्पॉन्सर्ड का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके, सो डोंट वरी इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड, बिकॉज यू कुड नॉट ऑप्टेड, वो प्रोसेस में ही नहीं था। Individual NLUs, those who offer NRI sponsored seats, they will notify that. Anyways, they use the All India rank, तो वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही वो कंडक्ट करेंगे पूरा एडमिशन प्रोसेस। देयर इज अ केस गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इन सुप्रीम कोर्ट। क्या पता शायद ये ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो, जजमेंट अगेंस्ट में आ जाए तो, बट अगर ये रहा तो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही अप्लाई होगा और सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ओके, सो can we edit the preferences after the payment? You cannot edit the preferences once it has been submitted. बेसिकली मतलब जो 27 दिसंबर का विंडो है तब तक ऑलमोस्ट एडिट का ऑप्शन सबके पास अवेलेबल रहता है। 27 दिसंबर को मान लो आपने कोई चेंज नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली सबमिटेड माना जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप 27 दिसंबर 10 PM तक कुछ भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बट उसके बाद नहीं कर सकते हो। नहीं टच किया तो वो फाइनल माना जाएगा। फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन वी सबमिट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और नो? डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है, गवर्नमेंट से बनता है, ठीक है। इन सम केसेस लाइक नालसार एंड ऑल, probably this may work, but this may not work everywhere. ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट से लेना पड़ता है। ओके, अगर अप्लाई किया था डोमिसाइल के लिए, रिजर्वेशन शो किया था, तो ये सर्टिफिकेट्स बना कर रखने चाहिए थे ना। ये बनवाओ फटाफट, रिक्वेस्ट करो, कोशिश। कैन आर स्टूडेंट्स? जनरली इट इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स ओनली, बिकॉज वहां पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। When do we need to submit domicile surveys? Now after the first phase in Jan? No, here you have to upload ना, domicile certificate की बात कर रहे हैं ना, mandatory document है। If we get second preference and want the first one, but the next round if you don't get the first one, can we still go for the second preference? Yes, that is yours anyway, provided you are making those payments and all, तो वो तुम्हारा ही है, ठीक है। आप नेक्स्ट राउंड में भी फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, थर्ड राउंड में भी फ्लोट का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। I'll be getting tier 3 or tier 4 NLUs through my rank students. Should I keep on them on top? That's what I told you to avoid. टीयर 3 तुम्हें लग रहा है कहीं मान लो बाई चांस ऐसा सिचुएशन बन जाए कि टीयर 2 में जा सकते हो, तो इसलिए अपग्रेड का ऑप्शन हमेशा बचा करके रखना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। ओके, सो एवरीवन विल गेट, नहीं, दे जनरली गिव इट टू ऑल इंडिया 25,000 रैंक्स। ओके, सो 25-30,000 रैंक्स तक नॉर्मली काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बुलाते हैं। तो उसमें देखो रिजर्व कैटेगरी में तो फिर भी उनके रैंक पे कवर हो जाता है, जनरल कैटेगरी में उतना जाना नहीं है, सीट्स लिमिटेड है, आपको पता है। ओके, so that is how it will work. Okay, so everyone will not get, those who are eligible will get that link. Okay, so you'll receive that link. Okay, so what if I want to get into Nalsar and that's my first option, but I put NLSU as my first? If you put NLSIU on top, you are allocated that, you cannot go to Nalsar. So if you want Nalsar, you have a good rank, you have to keep Nalsar on top. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। फर्स्ट प्रेफरेंस अगर अलोकेट हो गया
तो डाउनग्रेड नहीं होता है, किसी भी केस में डाउनग्रेड नहीं होगा। मान लो इफ योर ऑप्शन थर्ड इज गिवन टू यू and suddenly you realize I would have liked to go to my fourth preference, it will never happen. Now you can only check for first and second preference, so please be careful with this. I spoke about this. Okay, देखो सर्टिफिकेट्स अभी अपलोड करने हैं, रीड दैट, मैंडेटरी उन्होंने लगा रखा है डॉक्यूमेंट में, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब अभी अपलोड करने हैं आपको। क्लास 10 सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। NRI have already questioned. For OBC candidates, if you belong to non-creamy layer, आपको अपना OBC certificate इस साल का submit करना पड़ेगा. Okay. Remember, OBC and EWS certificates are renewed every year on 1st of April. तो आपको इस साल का certificate, पुराना certificate work नहीं करेगा. Okay, please understand this. Do we need to pay upgrade fees again and again? No. You pay once the counseling registration fee, 30,000 or 20,000, as in your case. And you pay the confirmation fee, non-refundable confirmation fee, only once. So ये दोनों एक ही बार पे होगा, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है. Okay, if you get an NLU but choose to use float to get a better one, will we lose that NLU? If you are upgraded, you lose the previous NLU. तो आपको नेक्स्ट NLU अब जाना ही पड़ेगा. ओके, सो आपने फ्लोट ऑप्शन रखा, आपका एक नेक्स्ट बेटर ऑप्शन आपको एलोकेट हो गया नेक्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट प्रीवियस राउंड में जो आपको NLU एलोकेट हुआ था वो अब आपके हाथ से निकल जाएगा. यू विल डेफिनेटली लूज दैट. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. We have to pay a confirmation after no, only one time. Confirmation and counseling registration fee are only one time and they are part of the overall fee. Okay, please understand that. Okay, देखो, seats are limited across each of the categories. If you have been called for the counseling, it's better you participate in the counseling. Okay, please understand this. आप कुछ लोग अपने अपना रैंक बता के जो बोल रहे हो ना, तो उसको प्लीज अंडरस्टैंड करो, क्योंकि स्पेशली रिजर्व कैटेगरीज में ना काफी चेंजेस ऊपर नीचे हर साल हो जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना. Is there any alternative of domicile certificate? No, there is no alternative for domicile. किसी भी सर्टिफिकेट का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है. I'm really surprised why you guys didn't get it done when you showed it in the application form. 4 महीने application form चला यार, exam हुआ, everything. See how you can get that. Please do that. There's no alternative for any certificate. आपको जमा ही करना पड़ेगा. Please understand this. Okay. Does the previous seat loses? Yes. If the update doesn't happen, upgrade doesn't happen, you retain that seat. फिर वो लूज नहीं करते हो, उसको रिटेन करते हो. अपग्रेड नहीं हो रहा तो फिर तो आपका कोई सीट लूज ही नहीं हो रहा है, आप उस सीट को रिटेन करके रखते हो सब्सिक्वेंटली, जब तक आपका फ्लोट ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एक बार लिस्ट में नाम आने के बाद वी कंपल्सरी नीड टू पे द कंफर्मेशन फीस, उसके बाद अपने आप अपडेट होता रहेगा. यस, एक बार जब नाम आ गया तो आपको कंफर्मेशन फी पे करना है, उसके बाद वो फ्लोट ऑप्शन के थ्रू आपका अपडेट होता रहेगा. लेकिन अगर आप प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने कंफर्मेशन फी पे नहीं किया तो आप एग्जिट हो जाते हैं पूरे प्रोसेस से. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, yes, the entire NLU preferences have been done basis lot of feedbacks from the students, from the previous year alumni, other factors considered, सबको ध्यान में रख के ये preference हमने दिया है. I'm not saying you do not have your personal choice. All of you have personal choice. It's a strong advice that you go like this. आपके personal reasons, if you believe that your reason is more compelling than anything else, तुम्हें यहीं पे जाना है, please go ahead. Today we were interacting. One of my colleagues said that he received a call. A student was like very choosy. इस स्टेट नहीं जाना है, उस स्टेट नहीं जाना है, मिल तो अच्छा NLU रहा है बट नहीं जाना है, वहां चले जाएंगे because of certain factors. Please understand, this 5 year of education will remain with you for lifetime. You will not go another 5 years of education. ना? You'll again not go and do कि next time मैं NLS Bangalore में जाता हूँ या किसी और अच्छे NLU में जाता हूँ. Whatever you choose right now, that learning will remain with you for entire career. So please be careful. If it requires moving to another city, moving to another state, please do that. You can always come back to your original state, your home state, and practice or do a job over there. Don't sacrifice this opportunity just because you believe this state doesn't. Sometimes I'll give you an example. NUJS Kolkata nahi jana. Kolkata is too crowded. What you have to do with the city?
घूमने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो? रेसिडेंशियल कैंपस है, आपको हॉस्टल में रहना है, तो आपको सिटी से क्या मतलब है यार? कोलकाता हैज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, इंक्लूडिंग Magic Circle law firms coming over there. Clifford Chance comes over there. Linklaters comes over there many a times. Why do you want to lose that opportunity? घूम शहर में भीड़ है, कैंपस में तो उतने ही स्टूडेंट्स हैं ना जितने को लोकेट किया जाएगा, जितनी सीट्स हैं। उनके साथ ही तो रहना है, उनके साथ ही तो सीखना है, उनके साथ ही पढ़ना है। सिटी से क्या मतलब है? बैंगलोर एयरपोर्ट से सिटी जाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बैंगलोर नहीं जाएंगे। You can't have these reasons. Okay, 5 years of education is more important. Move to another city. Okay, if required. Okay. जोधपुर is far better than गांधीनगर. Don't worry. बहुत सोच समझ के लिस्ट आपको दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, जिनके बेसिस पे whatever is happening everywhere, please understand, we have not given you a made made up contact programs results। जो इस बार रिजल्ट्स भी है ना हमारे, वो सारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे। तो मेड अप कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स नहीं कि एक सेशन अटेंड कर लिया, एक जीके कैप्सूल अटेंड कर लिया, हमारे रैंक डिस्प्ले हो गया। We do not do that. My every single result is audited every year by a third party who will lose his or her license. So there is a firm which audits our results in due course of time. Okay, chalo, I think I've covered everything over there. Actually, as far as go ahead, complete your admission counseling process. All the best to everyone. Those who are waiting for the ALET results, hopefully it will be there tomorrow night around 8:30. aa jana chahiye based on the previous timelines. Those who are preparing for SLAT, give your best shot. It's an easy examination. Just target good numbers over there. कोशिश करो 40-45 से 40 से ऊपर स्कोर करने का। आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। एंड द मोमेंट यू complete your SLAT exam, please go ahead and start working on your interviews, because that's also carry 30% weightage. All the best, guys. Go ahead. I'll keep coming back. We'll keep doing sessions. Okay.